वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। इसके पहले हमने क्विज में देखा था पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड। अब अभी तक आपने जो भी सीखा प्रेजेंट और पास्ट, अब दोनों को हम मर्ज करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया। सो बी रेडी। द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। शी डज नॉट डैश द क्वेश्चंस। ऑप्शन ए आंसर, ऑप्शन बी answers, option C answered, option D all of the above. The right answer is answer the first form. does के बाद do does did जब भी दे देंगे तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। so the right answer is she does not answer the questions. Question number 2 goes to you. The people dash such things. Do not understand, does not understand, did not understood, all of the above. The right answer is do not understand. The people do not understand such things. Question number 3. The child dash all the papers. Tear, tears, teared, all of the above. The right answer is tears. प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यहां यूज कर रहे हैं बिकॉज द चाइल्ड इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो एस और es विल बी एडेड. टेयर्ड इज नॉट अ वर्ड. अगर पास्ट फॉर्म सही होगा जब हम सही फॉर्म का यूज करेंगे, TORE, टोर, टेयर, टोर, टॉर्न, तो यहां पर टोर के जगह टेयर्ड का यूज है जो कि गलत है. क्वेश्चन नंबर 4. दे डैश ऑल द क्लासेस. अटेंड, अटेंडेड, डिड नॉट अटेंड, ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. बिल्कुल तीनों सही है. दे अटेंड ऑल द क्लासेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे अटेंडेड ऑल द क्लासेस पास्ट इंडेफिनिट, दे डिड नॉट अटेंड ऑल द क्लासेस पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव हो गया. क्वेश्चन नंबर 5. द वुडकटर डैश हिज एक्स एंड स्टार्टेड हिज वर्क. शार्पेन, शार्पेन्स, शार्पेंड, ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज शार्पेंड. पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे, MV2 का यूज करेंगे. द वुडकटर के हिसाब से शार्पेंस, बी नंबर भी सही हो सकता है, लेकिन उसके बाद का सेंटेंस देखने से हमें पता चल रहा है एंड स्टार्टेड हिज वर्क, और उसने अपना काम शुरू कर दिया, मींस टोटल जो सेंटेंस है वह पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट में नहीं. क्वेश्चन नंबर 6. डैश अलाउ देम टू एंटर द हॉल. डू यू, did you, why do you, all of the above. The right answer is all of the above. Do you allow them to enter the hall? Did you allow them to enter the hall? Why do you allow them to enter the hall? तीनों सही है. Question number 7. She dash a flower and went home. Pluck, plucks, plucked, all of the above. The right answer is plucked. plucked, MV2 का यहां यूज करेंगे. शी के हिसाब से plucks भी सही होगा, लेकिन सेकेंड पार्ट देखने से went home यह दिखलाता है कि यह पास्ट टेंस में पूरा सेंटेंस है, then MV2 will be used plucked. Question number 8. They dash everyone and ran away. Cheat, cheats, cheated, all of the above. The right answer is cheated and ran away. दिखला रहा है कि यह पूरा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, so cheated, MV2 will be the right answer. Question number 9. He dash the game. Lose, loss, lost, all of the above. The right
आंसर इज लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। MV2 का यूज लॉस्ट के रूप में हम करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द नर्स डैश द बॉटल एंड गेव मेडिसिन टू द पेशेंट। shakes, shaked, shook, all of the above. The right answer is shook. द लास्ट पोर्शन से फिर मैं बोलूंगा, गेव मेडिसिन से पता चल रहा है पूरा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। अब कंफ्यूजन क्या है, शेक्ड और शुक, तो यहां वर्ड स्टॉक करना होगा शेक, शुक, शेकन, शेक, शुक, शेकन। सो द सेकेंड फॉर्म इज शुक, नॉट शेक्ड। शेक्ड कोई वर्ड नहीं है, शुक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शेक, यह आपको वर्ड स्टॉक करना पड़ेगा। तो चलिए, अब आपको पता चला होगा कि कितना आपने सीखा। अगर आप कंफर्म हैं तो आगे स्टेप में जाइए, अगर श्योर नहीं है तो इसको फिर से स्टडी कीजिए, कमांड कीजिए, उसके बाद आगे जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।